Okay. So now I come here and I do a group by this broadcast, right? So now I've got this SQL code running some का ये हो गया. अब तुम्हें क्या करना है? So what you guys need to do is you need to find out the opening balance, right? So now the SQL code for opening balance is found from the stock item batch details. That's a master. So basically guys, what is happening here is, I'll tell you how it is working out is, if I look at the schema, तुम इसको इस तरीके, just understand it in terms of the schema. This is a voucher, all inventory details, batch item details. ये समझ में आ गया? So voucher inventory is at this level, batch allocation is at one level lower. ये समझ में आया बेटा कि नहीं आया? Yes, sir. Now, but your stock item batch details, the opening balance comes from here. You go down and you go to batch allocation details. Is it clear? Okay, sir. Now, this will give you only the opening balance. It does not give you the closing balance. At the stock item non-batch details, you get also the closing balance also. Is this point clear? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Right. So this is going to give you the opening this thing. So I pick this up here. Here. So I pick this up. Right. So now you need to find out from this particular stock item batch allocations my opening balance and add it to your running sum to give you the closing balance quantity. लॉजिकल है कि नहीं है? और am I going too fast? बोलो. Yes, sir. Okay, fine. So here I am assuming that this is clear. So how you do that is by using this particular DAX code. So which is here. This. So what it says is that for this given company name, this stock item name and this given batch name, I want to find out the opening balance. So how would you go about doing it within SQL? बताओ. Think about it. How would you go about doing it in SQL? Can this function have multiple parameters? बोलो. You can have, right? Yes or no? So, as per me, in terms of SQL, it's going to be something like this. Create function. This is getting the opening balance batch sales. Is this clear? Add company name,
where char where char 255, ठीक है बेटा. Then at batch name, जैसे ये किया गया ना इसमें, इज इज क्लियर. where char 255, then comma at stock item name where char 255. यहाँ तक समझ में आया बेटा कि नहीं आया? Yes, sir. Initial batch returns this thing, begun tot underscore batch, set tot equal to batch equal to select minimal opening balance quantity from stock item batch details, where item name is equal to at stock item name and right company name is equal to at company name, right, and at batch name is equal to batch name. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. So that will come from that particular row. नहीं पर ये सीक्वल में कैसे होगा? ये पैरामीटर से ही होगा बेटा, और कुछ नहीं है. रिटर्न टोट अंडरस्कोर बैच. ये समझ में आया बेटा कि नहीं आया? ये सुनो. Yes, sir. ठीक है बच्चों, ये आ गया. देवज्योति, एनी क्वेश्चंस? बोलो बेटा, एनी क्वेश्चंस? नहीं सर. पूछो बेटा, पूछो, जो भी तुम्हें पूछना पूछो. पूछो बेटा. So I go here, right? Now I come down to the next one, which is going to be my which measure, third, fourth और second, third हो गया था कि fourth या fifth हो गया था. Fifth. Right? अब हम लोग कौन से पे लेंगे? So now, Ritesh, this much I have done, this much I have done. Which is going to be the next one? If I have done this, then I can also do this. It's the same.
So closing balance value batch will also come in. So closing balance value batch also follows the same logic as closing balance underscore quantity underscore batch. The measures are changed from quantity to amount. Is this clear? Yes or no? अब Yes, आ sir. जाओ नेक्स्ट वाली पे, द इनवर्ट क्वांटिटी, विच इज द मोर इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज इसी से ही बैच मिलता है. अभी बैच डायनामिक का क्या हुआ है साहब? Now in this particular case, इस वाले केस में, बैच डायनामिक के केस में क्या हुआ, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? रितेश देवज्योति बताओ. What is the difference between this and this? Date compare different है sir. करेक्ट. तो इसमें और इसका एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस होगा? See, this will work with slicer. Are you understanding it? So closing batch quantity this measure has been created for dynamic calculation of the closing batch quantity. Is this clear? Definition. So this measure is defined as follows. Calculation by time slicer of the closing batch quantity. So the closing balance quantity is picked up for all the dates less than or equal to the maximum date of the time slicer.
इस देखिए, the remaining logic remains the same as in closing underscore balance underscore quantity underscore batch, right? Closing underscore balance underscore quantity underscore batch. So the only change here is going to be कि ये वाला time slicer वाला आ जाएगा. Dipjyoti, is it clear or not? Ritesh, clear है बेटा कि नहीं है? Yes, sir. So this is the only change. Now बताओ Ritesh, let's come down to inward amount batch, inward quantity batch. इसका क्या मतलब होगा? इसमें और क्लोजिंग बैलेंस में क्या डिफरेंस है? बताओ बच्चों. नहीं आया समझ में? ध्यान से देखो ना क्या डिफरेंस है. एवरीथिंग इज द सेम but there's a difference. See this one again and see this one again. What is the difference? यहाँ पे देखो, ये वाला पोर्शन देखो. ये वाला पोर्शन देखो. बोलो बच्चों. Okay. So the only difference is the same thing is there, but just that we have included only all the ledger group accounts which are included in purchase beta. Okay. So if I include this, so the given column is defined as follows. Definition, right? This defines the total inward movement
by stock item, batch, company and go down. Is this clear? The inward movement is defined as any transaction associated with the ledger group purchase and not having the movement types associated with order, delivery notes and receipt notes. Is this point clear? Does the definition of this column is the same as, बोलो बच्चों, closing quantity batch with the business condition of ledger group being purchase added to the same. Everyone, is it clear or not? Team? Yeah. बेटा बोलो देवज्योति, any questions? No, sir. नहीं रितेश, हाँ रितेश, देवज्योति एकदम चुप है, वो चला गया. Okay, so here we go. Is this clear बेटा? Now it's simple. Then 8th, inward amount batch will also remain the same. Definition. This includes all the inward amount associated with ledger group purchase and not associated with the movement types order, delivery notes and receipt notes. So I can add these delivery notes and receipt notes anytime I want to. The business logic remains the same as in inward batch quantity, except that the measure is changed from quantity to amount.
Yes or no? Yes, sir. अब बेटा इजी हो गया है कि नहीं हो गया? बहुत इजी हाँ सर, अब सही है। है ना? तुम्हें पूरा का पूरा मैंने पूरा का पूरा ये बता दिया. So now I come down to the next is the weighted average rate. This one, because मैं पूरा का पूरा वो कर रहा हूँ. Weighted average rate. This is defined as follows. Definition. This is defined as the divisible of inward batch amount and inward batch quantity. Applicability. This column gives the weighted average rate for a given stock item at a given go down and batch for a given company name on a given time. Yes or no? Yes, sir. Then 10. Any questions, beta, up till now? No, sir. Okay. So this gives the cost of goods sold for a given item at a given go down for a given batch and a company name on a given date. The cost of goods sold is defined as the sales quantity multiplied by the weighted average rate. Standard? Fun है बेटा? Yes or no? हाँ, sir. ये हो गया तुम्हारा. जय सिया राम.
जय श्री राम. एक सेकंड. Then gross profit. इसमें बेटा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है क्या? शायद ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा. Okay, now Ritesh, I want you to try this one. What is this one got to do with it? How will you do it? How will you define this? बोलो बेटा. सेम ही रहेगा सर, बस डेट जो है वो लास्ट नहीं, डेट ये कंसीडर डिफाइन कर रहा है तो इसको मुझे एक्चुअली डिफाइन करता है पड़ेगा, क्योंकि बेटा जब तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक मैच करना होगा ना, देन दिस विल बी यूज्ड. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम. This is a very important column. When the closing stock is to be matched with tally closing stock, then this column shall be used. In this column we find the maximum date for a given stock item at a given go down for a given company name and batch. The maximum value on the last date. The stock item value on the last date for a given stock item. अब समझ में आया कि नहीं आया? सर.
क्योंकि उसके पहले ये आएगा ना मैक्स डेट आइटम बैच, ये वाला। तुम इसी से मैच करोगे। इज दिस क्लियर? यस तो हर स्टॉक आइटम नेम, कंपनी नेम, बैच, गोडाउन के लिए एक मैक्सिमम डेट है कि जहां पे उसका लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है। नहीं आया समझ में? अच्छा बनाता हूँ, रुको। देखो बेटा, you will start with here. Oh, it's got stuck about. When it's streaming, this whole thing gets blocked. So this, you understand? This column finds the maximum date for a given stock item, batch, go down. And a company. In the inventory history. इसको मैं पहले ले लेता हूं, पहले कि ये मैक्स डेट आइटम से सारा कैलकुलेट होगा। मैक्स डेट आइटम this important attribute is used to calculate the last date in the inventory history for a given stock item, company name, batch name, and batch name. Is it correct?
based on the beta the last state, we shall give the closing balance quantity and closing balance value for the purpose of inventory audit. ये सही आया समझ में कि नहीं आया? The definition attached is herewith. Type column. This is because row level contexts were used based on the dimension entries in the given table. Is this clear, beta? Yes, sir. So we have excluded the following movement types for the calculation of this column. Orders, sales order, purchase order, delivery notes and receipt notes. Is it clear? बोलो बेटा. अब बताओ सीक्वल कोड कैसे लिखोगे? चलो, द सीक्वल कोड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सेम इज एज फॉलोज. अब रितेश बताना शुरू करो. चलो, आई स्टार्ट. नमस्कार. बताओ बेटा कैसे करोगे? It's very simple. With CT1 as select max of date as what? Max underscore date. Right? अब ग्रुप बाय करना है सारों से. So at what level of hierarchy we are taking? Company, stock item name, batch, go down. From stock item batch, inventory details, where
वाउचर टाइप पेरेंट नॉट लाइक, हाँ बोलो बेटा, नॉट इन कर दो चलो, नॉट इन सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सेल्स डिलीवरी नोट रिसीव्ड। ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिसीट नोट, ग्रुप बाय ये बेटा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये सेव हो गया तुम्हारा। नाउ द लास्ट डेट ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस डेट, मतलब ये वाला कैसे कैलकुलेट होगा? अब इस तिथि को ले लेगा वो। So the way it will work is select star into max underscore date from CT1. Is this clear? Yes or no? यस सर। एक मिनट देवज्योति से पूछे तो आना चाह रहा कि नहीं? अब इसके बाद ये वाला आएगा, क्लोजिंग बैलेंस लास्ट डेट। So this date for a given stock item at a go down
for a given company and batch. ये समझ में आ गया? इसकी तुम सीक्वल लिख सकते हो, ट्राई करो. Is this clear? सर ये दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? ये लास्ट डेट जो तुमने कैलकुलेट की थी उस पे उसने क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू निकाली है. ओके, जो मैक्स वाले में कैलकुलेट किया था सर उससे. हाँ, ओके सर. ठीक है. इसका सीक्वल कोड होगा सर विथ सिटी वन एज. हाँ, सीक्वल कोड होगा, बताओ. थोड़ा सा टेढ़ा है. विथ CT1 एज सेलेक्ट ये मैक्स ऑफ मैक्स ऑफ ये क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू बैच. क्लोजिंग अंडरस्कोर बैलेंस अंडरस्कोर वैल्यू अंडरस्कोर बैच. चलो चलो फिर फिर हम टेबल ले लेते हैं सर. स्टॉक आइटम बैच इन्वेंटरी डिटेल वेयर कंडीशन में आ जाएगा. कंपनी नेम बैच गो डाउन इसमें बेटा ये भी और हो मैच. सकता है फ्रॉम स्टॉक आइटम बैच इन्वेंटरी डिटेल या फिर वेयर कंपनी नेम. नहीं, मैं वेयर होगा कि ग्रुप होगा. अच्छा, तुमने ऐसे किया. वेयर कंपनी नेम. बेटा ये कहीं सेल्फ जॉइन तो नहीं है पूरा का पूरा? सेल्फ जॉइन है बेसिकली. हाँ सर सेमी टेबल पे पढ़ रहा है. नहीं, मैं बताऊं इसको कैसे लिखा रहेगा. देखो बेटा, सेलेक्ट ये राइट. ये सेल्फ जॉइन से होगा बिकॉज इसके दो इनर कॉन्टेक्स्ट है ना. स्टॉक आइटम नेम गो डाउन कंपनी नेम बैच. CT2 as ये और इधर आ जाएगी मैक्स अंडरस्कोर डेट. जी 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 जी. डेट नहीं होगी.
ऐसे कर सकते हैं ना इसको, कॉमा डेट, CT3 as select A dot star from CT1A join CT2B on A dot stock item name is equal to B dot stock item name and A dot company name is equal to B dot company name and A dot batch name is equal to B dot batch name and A dot go down name is equal to B dot go down name and B dot date is equal to max underscore date. ये max underscore date की एक सब query बने, so we'll have to make a sub query for this ना. It's going to be a function for getting the maximum date. So dbo dot underscore function underscore max date ऐसे हो जाएगा. Create function dbo dot fn underscore max date. इसमें इनपुट क्या रहेगा, स्टॉक एट स्टॉक आइटम नेम वेयर कैर 255 एट कंपनी नेम वेयर कैर 255 at batch name where can 255 right returns decimal 13,5 declare begin declare closing stock number at closing stock number as decimal 13,5 set at closing stock number equal to select max closing underscore date from, क्योंकि मैक्स क्लोजिंग डेट इधर से आ रहेगी ना, स्टॉक फ्रॉम, so there is a temporary table here, right? ये max state हो गया. We can make it into a max state here. This is the max state. So we can make a permanent table also. अच्छा, okay. Stock item batch, sorry, max closing date from max underscore date जो ऊपर गई थी टेबल, join where company name is equal to at company name
and batch name is equal to at batch name and go down name is equal to at go down name and बस ये तीन है ना. स्टॉक आइटम नेम is equal to at stock item name. राइट. मैक्स स्टेट थी ना, क्या नाम था उसका टेबल का, ये रही ना. हाँ मैक्स स्टेट ये रही. रितेश समझ में आया बेटा कि नहीं आया? डिड यू गेट इट? Yes, sir. Return at closing stock number end. हो गया खत्म. Is it clear beta? So now you can understand how the functions, the procedures and everything works together within the DAX code. Anything else? So I'll give you this document. You try and complete the stock item batch inventory details whatever. उनका specs पूरा खत्म कर लो. Correct? Okay, sir. Right? And that should close you one. So if you're able to do this, then stock item inventory, stock item view will be a piece of cake. This is clear? And then ledger view. That's it. ठीक है बेटा? Okay, sir.